ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वो है 5500 ड्रोन जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अक्टूबर 2024 में हुआ था और एक इंडियन स्टार्टअप की तरफ से ही हुआ था दिल्ली में। अब मुझे बता आप क्या सोच रहे हो कि इन्होंने मंगाए होंगे 10-15 हजार ड्रोन चाइना से और अपना सॉफ्टवेयर डाल के प्ले किया होगा, बट आप गलत हो। मैंने इनका R&D लैब विजिट किया और एक ऑब्सेशन देखा इनकी कंपनी में कि उन्हें हर एक चीज खुद से बनानी है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इनके स्वार्म ड्रोन के फ्रेम्स कैसे बनते हैं, कैसे LED वगैरह लगता है। हम थोड़ा और डीपर जाएंगे, देखेंगे कि अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कैसे खुद से कस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स, कस्टम फ्लाइट कंप्यूटर्स वगैरह बना रहे हैं, कंट्रोलर्स वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे कि वो अपने शोज कोरियोग्राफ कैसे करते हैं, ये जो शेप्स वगैरह बनाना होता है, लाइटिंग वगैरह। एंड फाइनली हम उनका एक डिफेंस ड्रोन एक्सप्लोर करेंगे जो एक ट्यूब लॉन्च्ड वर्जन है, काफी कूल है। ये है एक रेयर लुक इनसाइड बॉट लैब डायनेमिक्स। तो शुरुआत करते हैं फ्रेम के साथ। फ्रेम एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मोटर जाएंगे, बैटरी जाएंगे, कंप्यूटर्स, जीपीएस सब कुछ जाता है। तो सुपर स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए ये, पर ये सुपर लाइट भी होना चाहिए, क्योंकि इनका एम है कि पूरा ड्रोन जो है वो 250 ग्राम के नीचे हो, क्योंकि उसके ऊपर लीगल रेगुलेशंस बदल जाते हैं। ये पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तन्मय बनकर, जो वन ऑफ द फाउंडर्स है बॉट लैब डायनेमिक्स के। तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करने दूंगा। तो तन्मय भाई, व्हाट इज ऑल दिस? Okay, so this is, so I'll just start with, हाँ आप करो, आप करो। you are at the mechanical design floor of BotLab. This is where the engineering team sits that is responsible for the chassis, enclosure and all the mechanical components that are on the drone. So this is the one that we have flown before. You see there are three parts. The most complex of these is the one that I'm holding in my hands. This is the middle piece. It has, as you'll see, you have mounting holes. This has 4 surfaces, so 1, 2, 3 and 4. This is a very complicated mold because it has sliders and ejector pins embedded in the mold itself. So, and this is also the structural component which provides stiffness to your frame. Now this is injection molded. All of this is injection molded. You'll see that there are phases in your design process. We initially start with something that is 3D printed in CAD. Once we have 3D printed in, say, PLA or ABS, then we move on to something that is resin printed. You'll see this is the one. This is all printed in resin. Resin has better accuracy. So dimensional accuracy is better on this. And when you have different components that have to mate together, this is where you go. Final process is when you design a mold and this is the one that is the latest. You'll see it has structure for a battery. Your electronics go in here. You have a top plate. This is also housing for your GPS. So your GPS antenna is housed here. And if I do it correctly, it should snap. Okay. And this is the diffuser. So your LED panel will be here. And again, if I do it properly, snaps together. That is your drone. How many LEDs be inside this? So we have 2 variations. One is with 60 LEDs and another with just 3 LEDs. Okay. So we have both under trials. This will be hitting the stage, so to say, in a month's time. Our target was to keep it under 250 grams. This is close to 248, 246 grams. Everything inclusive, everything battery. with the battery, with the electronics on board, and just a few grams here and there. So कुछ भी variation आएगा तो it should not go above 250 at any cost. So this frame is different. This frame is different. Yeah. So this is the old frame. This is the one that we have been operating. Now this is slightly bigger. This has motors which has propellers which doesn't fold. On this, we'll see later that we have motors with folding propellers. This is primarily for the international market. We have a lot of shows coming, a lot of requests from abroad, and this makes it easier for us to fold it into a very small form factor and then ship it abroad. The battery enters from the other side, so all of your power regulation and the noisy electronics are housed in the back, and your receivers and others are housed in the front. So the battery pack, you all make the pack? So we make the mold for these. We have a partner who will basically sort the packs. There are processes where you grade batteries, you put them together in accordance with their internal resistance and other things.
And then we have a circuit, which is your battery management circuit that is made by us. We supply it to our partner, who will then complete the pack and give us the final pack. तो आप देख सकते हो कि एक फ्रेम बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, स्पेशली उसका मोल्ड वगैरह बनाना इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो ये कस्टम डिजाइन करते हैं अपने ड्रोन्स के लिए, कैसे फिट होते हैं अंदर वगैरह। वेलकम टू द मैकेनिकल डिजाइन से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले फ्लोर पे आ गए। दिस इज वेयर वी डिजाइन एंड प्रोटोटाइप PCBs. We can make up to 50 PCBs in a day and qualify them. This is our pick and place. This is a multi-head design. We have 50 lanes of components यहाँ पे. And you have a PCB. This is our logic board. This has motor controllers and flight controllers on a single board. In the previous design, there were two separate boards, but in order to save weight, we have now integrated them. So the machine will apply some paste. This is soda paste. Machine will one by one populate the components. After this will now move to the next station. This is a 6-stage reflow oven. You will put your PCBs here like so. It will come out the other side. When it comes out the other side, it has baked, and all the electronics have now taken up the solder. A technician will then qualify them. This is your oscilloscope, your power supply. He will make any corrections. There's a soldering iron there. After that is done, we will put it for optical inspection. So in here, you will inspect the joints. So basically this is two PCBs which mate to create a flight controller, and this is your MOSFETs. So you have 6 MOSFETs for one motor, and there are 24 MOSFETs here. So this is for a quadcopter. This will mate, and now you have a flight controller and motor controller integrated into one. This is how it will look, and this is how it will go on the drone. Again, once this is made, this is now mated with the chassis. So we'll do that. Please come. Here would be a good example. Yeah, there it is. So that part, so we have 4 motors, as you see, and that part is now integrated. You also have your battery with indication for your voltage, your capacity. So, and you can do a long press, and then the battery stays on. On top of this is where you will house your GPS. Let me just show you the GPS. This is our old system. This was a passive GPS. You have a passive antenna on this. Then this is the one that we are using. We have 2 iterations. So you had a module and an antenna. Now this was slightly on the higher side in terms of weight. So what we have done is we have now integrated the antenna and the module into a single system. But we wanted to make something that basically was our own. So this is the system that we have built. You have a receiver on one side, and you have the integrated antenna on the other. This weighs 6 grams. So this actually, the whole module weighs less than what we are using. This was made by us. This was off the shelf. But this was a critical component. Now we have replaced this with our own. ये सब काफी कूल था। अभी हम देखते हैं कि कैसे इनके कॉम्प्लेक्स शोज कोरियोग्राफ होते हैं, कैसे वो सब सेट वगैरह करते हैं। देखो, ये आपके स्वॉर्म उड़ने से पहले स्वॉर्म को रेस्ट करने के लिए कहीं जगह चाहिए, राइट। ये मैप के ऊपर स्टार्ट होता है। आप आपका लोकेशन लेते हो और देखते हो कहाँ ये सब आपके ड्रोन्स रेस्ट कर सकते हैं स्टार्ट के लिए। ये जो मैंने पहले 5500 वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला वीडियो प्ले किया था, उसमें आप देख सकते हो वो एक जगह सब बैठे थे एंड वो बॉट लैब का लोगो वगैरह फ्लैश कर रहे थे। ये जो सेटिंग अप है, ये एक मैनुअल स्टेप है जहाँ लोग जाके खुद इंडिविजुअली ड्रोन्स रखते हैं। ये लेआउट वगैरह फिर सब कुछ प्रोग्राम किया जाता है एक 3D प्रोग्राम में, जैसे ब्लेंडर हो या कोई और, जो उनका खुद का कोड रन कर रहा है, जहाँ पे वो एनिमेट करते हैं फॉर्मेशंस कि ये ड्रोन इस पॉइंट पे यहाँ आएगा, ये कलर फ्लैश करेगा। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर ताज गोवा का एग्जांपल चल रहा है, जहाँ पे उनका कोरियोग्राफी और आपका रियल एग्जांपल दिख रहा है। आप हर एक चीज डिफाइन कर सकते हो पोजीशन के साथ, जैसे जैसे आपका कलर हुआ, उसका ओरिएंटेशन वगैरह। फिर ये प्रोग्राम का आउटपुट हर एक ड्रोन में चला जाएगा, उसे कमांड किया जाएगा, राइट। इमेजिन एक इंजीनियरिंग पॉइंट से कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना खूबसूरत है।
क्योंकि आपका हार्डवेयर आपके सॉफ्टवेयर के साथ ब्यूटीफुली काम करना चाहिए साथ में, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ आपका शायद स्वॉर्म गायब हो जाएगा, टूट जाएगा, या वर्स्ट केस में आप लोगों को हर्ट कर सकते हो, जो रिसेंटली हुआ एक अमेरिकन स्टार्टअप के साथ। तो वो अपना ड्रोन शो कर रहे थे, एक ड्रोन आके उड़ के एक बच्चे को लगा, तो जियो फेंसिंग वगैरह ये सब करना पड़ता है, काफी लाइक कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। एंड सिंस बॉटलैब के पास ऑलरेडी ये सब इन हाउस कैपेसिटी थी वगैरह, तो वो लोग अभी फ्लाइट कंट्रोलर्स, रिसीवर, ESC वगैरह बेचने लगे अपने स्टोर के ऊपर, जो लाइक हम जैसे हॉबिस्ट लेके अपने खुद के ड्रोन्स बना सकते हैं सिमिलर वाले। तो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब हम लास्ट सेक्शन में इस वीडियो के हम बात करेंगे इनके सिस्टर डिफेंस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वायुद। ये एक प्रोजेक्ट है इनका कॉल्ड प्रोजेक्ट अत्री, जहाँ पे उनका एम है कि वो एक सब 250 ग्राम नैनो ड्रोन बनाए। और ये काफी कूल लगा मेरे को, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्म फैक्टर देखो, सबसे पहले तो एक ट्यूब शेप में ये ट्यूब लॉन्च हो सकता है, एंड जैसे ही लॉन्च होता है इसके आर्म्स वगैरह बाहर फोल्ड होते हैं। अब मेरे को इसका जो लेआउट है वो भी काफी सही लगा। अगर इनका वीडियो देखो तो हैवीएस्ट पार्ट जो है बैटरी जो सेंटर में, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो फ्लाइट कंट्रोलर वगैरह है वो ऊपर है, और पेलोड जो है वो नीचे है, कैमरा वगैरह। अब ये काफी इंप्रेसिव इसलिए क्योंकि अगर आप कभी भी ट्विटर पे हो और अगर आप देखो कोई किसी ने आर्मी को ड्रोन बेचा है, नैनो FPV बेचा है, हमेशा वो चाइनीज फ्रेम होता है और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो। तो ये इतना बड़ा रिस्क लेना टू डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच, वो भी इतना अलग ड्रोन, काफी अच्छा लगा मेरे को देख के कि कोई कर रहा है, वो शॉर्टकट नहीं ले रहे थे, इजियर वे नहीं ले रहे आउट। इनका एक और वीडियो है जहाँ पे ये एक सूटकेस का फॉर्म फैक्टर दिखा रहे हैं, जहाँ पे कैसे स्टोर होगा, पावर जनरेटर, बैटरीज वगैरह, वो भी काफी अच्छा लगा। तो काफी आगे लग रहा है ये प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी फॉलो करते हो इस डिफेंस ड्रोन के एरिया को, स्पेशली ये छोटे ड्रोन्स, बड़े ड्रोन्स का तो इकोसिस्टम काफी मैच्योर है, इंडिया में काफी बनता है, पर ये छोटे नैनो ड्रोन्स स्पेशली ऑलमोस्ट हर एक चीज चाइनीज से बेची जाती है आर्मी को, स्पेशली फ्रेम्स वगैरह। तो ये इंटरेस्टिंग है, आई होप ये कहाँ जाए, एंड आई होप इससे कभी ना कभी कंज्यूमर ड्रोन निकले, क्योंकि ये फॉर्म फैक्टर अच्छा लग रहा है लाइक रेगुलर यूज के लिए। तो हाँ, आई होप आपको ये बिहाइंड द सीन्स अच्छा लगा, एंड 3 मोर वीडियोस आने इस सीरीज में, इस फर्स्ट सीजन में। तो स्पेशल थैंक्स टू जयम शर्मा, वुडला चैतन्य, विशाल भारत, कृपल पटेल, कुमार अखिल, चंद्रबदन सिंह, श्रीकांत कापड़ी, मुन्नू बाबू, विशेष वत्सल, वॉट्स न्यू, विद्यासागर रौनकी, वर्शिष्ठ रेड्डी, प्रवीण वाकड़े, स्वास्ति देसाई, वेद हाटोलकर एंड किट फॉक।